नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका पॉलिटी। तो पॉलिटी के अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि प्रीएम्बल के बारे में क्या प्रावधान है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पहली चीज जो आती है आपके पढ़ने में वो है आपकी प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल होता क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो सभी हम आज के इस सेशन में समझेंगे। चलिए देखते हैं। प्रीएम्बल के अंदर जो शब्द लिखे हुए हैं आपके, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। तो ये सभी शब्द हमको देखने को मिलते हैं। इनके क्या मीनिंग है और इनका क्या महत्व है, तो वो समझेंगे। सबसे पहले कि प्रीएम्बल है क्या। प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है डॉक्यूमेंट का, जो कि एक्सप्लेन करता है कि पर्पस क्या है, रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, फिलोसफी क्या है पूरे संविधान का, कि उसके पीछे की जो फिलोसफी है वो इसके द्वारा समझाई गई है। सो अ प्रीएम्बल गिव्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय हाईलाइटिंग द प्रिंसिपल्स एंड द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इट शो द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि किस सोर्स से ये आया है। So, the preamble of the Constitution of India is an introduction of the Constitution which include the set of the rules and the regulation to guide the people of the country. अब इसका historical background देखते हैं। Before 1947, India was divided into two main parts, that is 11 provinces that were ruled by Britishers and the princely states ruled by Indian princes under the command of Britishers. So combining these two units form the Union of India. इन दोनों को मिलाने के बाद में क्या बना? Union of India. So the preamble is based on the principle written by the Constituent Assembly. It provides a way of life which include fraternity, liberty, equality as a notion of the happy life and which cannot be taken from each other. तो ये जितने भी आपके सिद्धांत है फ्रेटर्निटी के, लिबर्टी के और इक्वलिटी के, इनको अलग नहीं किया जा सकता। दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड दे कैनॉट बी सेपरेटेड। यानी कि विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी का कुछ भी मतलब नहीं होगा, और इक्वलिटी का बिना लिबर्टी के उसका भी कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि वहां अगर इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी है, इट वुड किल इंडिविजुअल परसेप्शन एंड फ्रेटर्निटी helps the liberty and equality in their course of action. अब बात आते हैं कि किसने लिखा प्रीएम्बल ऑफ इंडिया और इसका डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया? रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव December 13, 1946 and it was started from 26 Jan 1950, also known as the Republic Day. Now the component of the preamble of the Indian Constitution. Preamble शो करता है that the people of India are the source of authority. जो people of India है वो source है इसके, किसके? संविधान के। It means power lies with the citizen to elect their representative and they also have the right to criticize their representative. It comprises the date of adoption, which is November 26, 1949, and it states the objective of the Constitution of India, which are justice, liberty, equality, fraternity, to maintain the integrity and the unity of the nation as well as the nations. And it also justifies the nature of the Indian state, which is sovereign, socialist, republic, secular, and democratic. Now there is a case, PA Inamdar versus State of Maharashtra. In this case, Supreme Court delivered an unanimous judgment declaring that the state cannot impose any reservation policy on minority and non-minority unaided private colleges, including professional colleges.
So this judgment was an attempt to clear the previous judgment of the Supreme Court on the case of a TMA pipe foundation was the state of Karnataka and Islamic Academy of Education was the state of Karnataka. Supreme Court discussed some topic in this judgment related to the minority and non-minority unaided higher education institution. सबसे पहले रिजर्वेशन पॉलिसी पे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा that neither the policy of the reservation nor any quota or a percentage of admission can be enforced by the state in any minority or non-minority unaided educational institution. जो institution है वो free है to admit the student of their own choice, including student of other communities and also the student of the same communities from the different states in any manner the institution want. So the state cannot impose policies on the reservation for giving admissions on the marks less than the criteria that is set by the private educational institution who do not ask for help from the state. Even if the state is providing minimum resources to the private educational institution, that is not ground a state can implement its policy to force the institute on granting admission to student with fewer marks than the given criteria. तो ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी इस केस के अंदर. Now, objective of Indian Constitution. The main objective of the Indian Constitution is to promote harmony throughout the nation. As we know, Constitution is the supreme law and it helps to maintain integrity in the society and to promote the unity among the citizens to build a great nations. So the factor which help in achieving this objective are justice. अब जस्टिस में तीन चीजें जुड़ी हुई हैं. Justice comprises of three elements that complete the definition, which is social justice, economic justice, and political justice. So justice among the citizen is a necessary to maintain order in society, and justice is promised through various provisions of the fundamental right as well as the directive principle of the state policy, which is provided by the Constitution of India. अब बात करते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है. Social justice. Social justice means that the Constitution want to create a society without discrimination on any ground like caste, creed, gender, religion, etc. यानी धर्म, जाति और इन सभी के आधार पर किसी भी तरीके का समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा. So where people have equal status by helping the less privileged people, it will be considered as a social justice. यही सामाजिक न्याय है. So the Constitution tried to eliminate all the exploitation which harm the equality in the society. फिर दूसरा आता है आपका आर्थिक न्याय, economic justice. Economic justice means no discrimination can be caused by people on the basis of their wealth, income, and economic status. It means wealth must be distributed on the basis of their work, not with any other reason. यानी जो व्यक्ति जिस काम के काबिल है उसके अनुसार उसको आर्थिक उसको सैलरी या फिर आप वेजेस जो कुछ भी कहते हैं उसमें किसी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, उसके काम के अकॉर्डिंग मिलेगा. सो एवरी पर्सन मस्ट बी पेड इक्वली फॉर एन इक्वल पोजीशन एंड ऑल पीपल मस्ट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न फॉर देयर लिविंग. और जो अपॉर्चुनिटी है टू अर्न फॉर देयर लिविंग उसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा. फिर है आपकी पॉलिटिकल जस्टिस. पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स ऑल द पीपल हैव एन इक्वल फ्री एंड फेयर राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज. तो राजनीति के अंदर किसी भी तरीके का जो पार्टिसिपेशन होगा उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा. इट मीन्स everyone has the equal right to assess the political offices and have equal participation in the process of the government. अब बात करते हैं इक्वलिटी की. The term equality means no section of the society has any special privileges and all the people have given equal opportunity for everything without any discrimination. तो समाज के अंदर बराबरी का जो प्रोटेक्शन दी गई है वो इक्वलिटी के सिद्धांतों के द्वारा दी गई है. इट मीन्स रिमूविंग ऑल टाइप्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम सोसाइटी
to build a healthy environment for the people to live in. So everyone is equal before the law. विधि के समक्ष सभी बराबर हैं. फिर आता है आपका लिबर्टी. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ और हैव ए पॉलिटिकल व्यू एंड बिहेवियर इन सोसाइटी. आपको ये लिबर्टी है कि आप कोई भी राजनीतिक आइडियोलॉजी पसंद कर सकते हैं और ना पसंद कर सकते हैं. आप जो अपनी जीवन शैली है वो अपनी इच्छा अनुसार जी सकते हैं. कोई भी आप धार्मिक पद्धति है उसके अंदर भी आपको लिबर्टी दी गई. इट मीन्स नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन द सिटीजन in terms of their thoughts, feelings and views. But liberty does not mean freedom to do anything. परंतु लिबर्टी का मतलब ये भी नहीं हो सकता कि आप कुछ भी करें. A person can do anything but in the limit set by the law. And anything which can create public disorder cannot come under the liberty. यानी कि आपकी लिबर्टी से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. So these limits are set by the constitution to avoid injuries in the name of the liberty. Fraternity means a feeling of brotherhood and an emotional attachment with the country and all the people. It refers to a feeling which helps to believe everyone is the children of the same soil and are connected with each other. मतलब एक तरीके का भाईचारा और सब में एक ये फीलिंग कि हम सभी एक ही मातृभूमि. 13 जजेस थे, उनकी बेंच थी. तो कोर्ट ने कहा जो प्रीएम्बल है संविधान का वो संविधान का हिस्सा है और जो प्रीएम्बल है वो सुप्रीम पावर नहीं है और सोर्स ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं है, बट इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. इसका एक महत्वपूर्ण रोल है इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूज एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि जब आप अनुच्छेदों का व्याख्या करेंगे तो आप प्रीएम्बल की सहायता ले सकते हैं, वहां पे इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है. सो इट कैन बी कंक्लूडेड that the preamble is a part of the introductory part of the constitution. ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है और इसको संविधान का हिस्सा माना जाएगा. Now amendment of the preamble. After the judgment of the Keshavan Bharti, it was accepted that the preamble is a part of the constitution. So as part of the constitution, it can be amended under article 368 of the constitution. यानी कि इसको भी अमेंड किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत. परंतु जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द प्रीएम्बल उसको अमेंड नहीं किया जा सकता. उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की जा सकती जो उसका बेसिक ढांचा है. बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द बेसिक एलिमेंट ऑफ द प्रीएम्बल. एज नाउ प्रीएम्बल इज ओनली अमेंडेड वंस थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. तो प्रीएम्बल को एक बार ही अमेंड किया जा चुका है. वो कब किया था? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा. और इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया था? 42nd अमेंडमेंट के अंदर जो वर्ड था सोशलिस्ट और सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वो डाले गए थे प्रीएम्बल के अंदर टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक जस्टिस और एलिमिनेट द डिस्क्रिमिनेशन व्हाटसोएवर. सो थ्रू दिस अमेंडमेंट सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड बिटवीन द सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन वाज चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. यूनिटी ऑफ नेशन था उसको चेंज किया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. नाउ इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट. उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रीएम्बल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद में प्रीएम्बल को जोड़ा गया. सो इन द बेरुबरी यूनियन केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. रेदर इट वाज कंसीडर्ड एज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. परंतु केशवन भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो व्यू है वो चेंज कर दिया और उसने ये एक्सेप्ट किया कि जो प्रीएम्बल है वो संविधान का हिस्सा है और इसको भी अमेंड किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत. सिमिलरली इन LIC of India case, Supreme Court continued with its judgment on declaring preamble as a part of the Constitution. इसमें भी कंफर्म किया गया इस केस में भी LIC वाले केस में भी कि जो प्रीएम्बल है वो संविधान का हिस्सा है. So in the end, the preamble of the Constitution is considered a beautiful preface to the document as it contains all the basic information like the objective and philosophy of the Constitution. तो संविधान की जो फिलोसफी है वो प्रीएम्बल में देखने को मिलती है.
नाउ की वर्ड्स इन द प्रीएम्बल, कुछ वर्ड्स बता रखे हैं, उनका मतलब समझिएगा। सबसे पहला वर्ड है सोवरेन। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इंडिया इज अ सोवरेन स्टेट। तो सोवरेन का क्या मतलब हुआ? संप्रभुता। इसका मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट हैज कंट्रोल ओवर एवरी सब्जेक्ट एंड नो अदर अथॉरिटी और एक्सटर्नल पावर हैज कंट्रोल ओवर इट। बाहरी शक्ति का किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है हमारे अंदर के जो सीमा के अंदर जो भी सब्जेक्ट है। सो द लेजिस्लेचर ऑफ आवर कंट्री हैज द पावर टू मेक द लॉ इन द कंट्री विद रेस्ट्रिक्शन कीपिंग इन माइंड imposed by the constitution. So sovereignty in general has two types. ये दो तरीके की होती है, external और internal. External sovereignty means that a sovereignty in international law, which means the independence of the state against the other state, while the internal sovereignty talk about the relationship between the state and the people living in it. अब एक केस है, वो देखिए, in the case of synthetic and chemical limited versus state of Uttar Pradesh, Supreme Court decided that the word sovereign means that the state has the authority, everything within the restrictions given by the constitution. Sovereign means supreme or independence. So this case help in differentiating between the external and the internal sovereign. This case proposed that no country can have its own constitution unless it is not sovereign. तो किसी भी देश के लिए संविधान पॉसिबल जब ही है, वहां पे संविधान होना जब ही संभव है जब वो सोवरेन होगा। फिर है आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट शब्द जो है वो 42वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया ड्यूरिंग द इमरजेंसी। So the term socialist denote democratic socialism. It means political economic system that provides social, economic and political justice. Mrs. Indira Gandhi explains socialist as equality of opportunity or better life for the people. उन्होंने कहा socialism is like democracy. समाजवाद लोकतंत्र की तरह है। So everyone has their own set of interpretation, but in India, socialism is a way for the better life of the people. एक केस है, वो देखिए, in XL year of the Union of India, Supreme Court found that with the addition of the word socialist, a portal is open to lean the judgment in favor of the nationalization and state ownership of the industry. But the principle of the socialism and social justice cannot ignore the interests of the different section of the society, majorly the private owners. तो हमारे यहाँ पे जो समाजवाद है वो प्राइवेट ओनर्स का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं छोड़ेगा, उसको भी प्रोटेक्शन दी जाएगी। इस तरीके का समाजवाद को हमारे यहाँ पे अपनाया गया है। फिर अगला जो केस है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने कहा कि द बेसिक पर्पस ऑफ द सोशलिज्म इज टू प्रोवाइड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। एक बेसिक जरूरतों का जो स्टैंडर्ड होगा लाइफ का वो हर एक नागरिक को मिले देश के अंदर, ये पर्पस है समाजवाद का। एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डे दे आर बोर्न टिल द डे दे डाई। फिर अगला शब्द है सेकुलर। ये भी आपके 42वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट, इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो जो यहाँ के जो नागरिक है वो अपने अनुसार जीवन जी सकते हैं और वो कोई भी धर्म अपना सकते हैं। द स्टेट प्रोवाइड फुल फ्रीडम टू द पीपल टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। और जो स्टेट है सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करेगा, उसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव स्टेट नहीं करेगा और विद इक्वल रिस्पेक्ट करेगा और कोई भी तरीके का वहां पे भेदभाव नहीं होगा। सो द स्टेट हैज नो राइट इंटरफेयरिंग विद द पीपल विद देयर चॉइस ऑफ द रिलीजन, फेथ और वर्शिप इन एनी मैनर। नाउ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेकुलरिज्म। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हम हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, जो कि आपके अनुच्छेद 14 में गारंटेड किया गया है संविधान के। फिर दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड सच एज रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा इज प्रोहिबिटेड बाय आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है आपका आर्टिकल 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट डिस्कस ऑल द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर आपके आर्टिकल 24 to 28
It covers the right related to the practice of the religion. And Article 44 of the Constitution, it abandons the fundamental duty of the state to enact the uniform civil law treating all citizens as equal. अब एक केस है SR बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाइन जज बेंच थी, वो कोर्ट की उसने ये कंसेप्ट के बारे में कहा कि जो सेकुलरिज्म है ये बेसिक फीचर है संविधान का। फिर जो दूसरा केस है वो है बाल पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट हैड दैट ऑल द रिलीजन एंड द religious group must be treated equally and with equal respect. So India is a secular state where people have the right to choose their religion, but the state will have no specific religion. स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। फिर है MP गोपाल कृष्णन नायर was the state of Kerala. Court stated that the secular state is different than atheist society. जो सेकुलर स्टेट होता है वो एथिस्ट सोसाइटी से डिफरेंट होता है, which means state allow every religion and disrespect none. तो एथिस्ट सोसाइटी के अंदर तो किसी भी धर्म की कोई वैल्यू नहीं होती, पर सेकुलर के अंदर सभी धर्म की समान वैल्यू होती है, समान रेस्पेक्ट होती है। अब आपका जो नेक्स्ट वर्ड है प्रीएम्बल का वो है डेमोक्रेटिक। द टर्म डेमोक्रेटिक इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड वेयर डेमोस मीन पीपल एंड क्रेटोस मीन्स ऑथोरिटी, which conclude that the government is constructed by the people and India is a democratic state as the people elect their government at all the levels. That means union, state, local and other ground level. So everyone has the right to vote irrespective of their caste, creed or gender. So in a democratic form of a government, every person has a direct or indirect share in the administration. In the case of Mohanlal versus District Magistrate of Raebareli, court stated that the democracy is a philosophical topic related to the politics where people elect their representative to form a government where the basic principle is to treat the minority the same way people treat the majority. So every citizen is equal before the law in the democratic form of government. फिर आपका केस है Union of India versus Association of Democratic Reform. Court stated that the basic requirement of successful democracy is awareness of the people. लोगों की जो जागरूकता है वही एक लोकतंत्र का जो सक्सेसफुल होने का कारण बन सकता है। अवेयरनेस ही एक ऐसी, जागरूकता ही एक ऐसी चीज है जो किसी भी लोकतंत्र को मजबूत करती है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फेयर इलेक्शन, as fair elections are the soul of democracy, and democracy also improve the way of life by protecting human dignity, equality and the rule of law. फिर जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिपब्लिक। इंडिया हैज द रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट हेरिडेटरी मोनार्क लाइक ए किंग और क्वीन। तो यहाँ पे वंशों के अनुसार किसी की नियुक्ति नहीं होती है। जो इंडिया का जो गवर्नमेंट हेड होता है वो इलेक्ट किया जाता है। So the term republic is obtained from the res publica, जिसका मतलब होता है public property और commonwealth. It means the power to elect the head of the state for a fixed terms lie with the people. So in conclusion, the word republic shows a government where the head of the state is elected by the people rather than any birthright. So the original Constitution of India was written by Prem Bihari Narayan in a calligraphy with flowing italic style, and the Constituent Assembly took exactly 2 years, 11 months and 18 days to complete the final draft of the Indian Constitution. And the preamble of the Constitution of United States of America also start with the word "we the people." जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो प्रीएम्बल है वो भी "वी द पीपल" से स्टार्ट होता है। And the concept of the fundamental rights came from the American Constitution as they had 9 fundamental rights for their citizens. And the 44th Amendment deleted the right to property as a fundamental right, which was given under Article 31 of the Constitution. So the page of the preamble along with all other pages of the Constitution were designed and decorated by the renowned painter Byor Ramanohar Sinha of Jabalpur. And the Constitution of India is a handwritten constitution that was signed on 24 Jan 1950
by 284 members of the Constituent Assembly, where 15 of them were women, and it came into force 26 Jan, 2 days later from signing. And the final draft of the Constitution was completed on 26 November 1949, and it came into force after 2 months on 26 Jan 1950, known as Republic Day. And the concept of directive principle of the state policy is adopted from Ireland. And the concept of liberty, equality, and fraternity in our preamble was adopted from the French motto of the French Revolution. So it will not be wrong to say that the preamble is an integral part of the Constitution because it contains the spirit and the ideology of the Constitution. ये विचारधारा बताता है संविधान की preamble. So preamble highlights the fundamental values and the guiding principle of the Constitution. The preamble declared that the citizens of India accepted the Constitution on 26 November 1949, but the date of the commencement of the Constitution was decided to be 26 Jan 1950. Article 394 of the Constitution states that Article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379 and 394 came into force since the adoption of the Constitution on 26 November 1949, and the rest of the provision on 26 Jan 1950. So the preamble of the Constitution of India is one of the best preambles ever drafted, not only in ideas but expressions as well. इसके जो भाव है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खूबसूरती से इसको ड्राफ्ट किया गया है. It contains the purpose of the Constitution to build an independent nations that protect the justice, liberty, equality and fraternity, which are the objective of the Constitution. Thank you. आप हमारे प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं. प्लस कोर्स में जुड़ने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है. सबसे पहले आप मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा. रेफरल कोड है DUDI10 गूगल प्ले पे जाएं और जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है वो इंस्टॉल करें. वहां से आप सेलेक्ट योर गोल के अंदर NTA UGC NET सेलेक्ट करने के बाद में गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन, फिर उसके बाद में कुछ मंथ्स का ऑप्शन आएगा, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ. अगर 12 मंथ का कम से कम लेते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा. फिर आप मेरा जो रेफरल कोड है वो एंटर कर सकते हैं DUDI10. जैसे ही आप रेफरल कोड वहां पे एंटर करेंगे वो अप्लाइड शो करेगा. उसके बाद में आप पेमेंट